प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस वक्त प्रेजेंट होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the pointers are collinear. Now the term is collinear. Now the term is collinear. हमें बताया जा रहा है यहाँ पर in each of the following find the value of k. हमें k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी इस पार्ट में भी k दिया गया है और इसमें भी हमें इसका वैल्यू निकालना है। For which the pointers are collinear, जिसके लिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब ये है कि जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं? कोलिनियर। जब पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, ठीक है, A, B, C, these pointers are known as collinear. So हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो x1 is equal to 7, x2 is equal to 5, x3 is equal to 3, y1 is equal to -2, y2 is equal to 1, and y3 is equal to k. Now area of triangle किसके बराबर होता है? 1/2, ओके, ब्रैकेट x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट x प्लस x3। तो मैंने इस तरह से क्यों लिखा? ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ओके, नाउ यहां पर नाउ दिस इज कंप्लीट फॉर यू। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ पर? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर then the area of triangle is 0 because pointers lie on the straight line. When the pointers lie on the straight line, then it means triangle can't be formed, and when triangle cannot exist, then the area of triangle is equal to 0. So what we write here, area of triangle is 0 because the points lie on the straight line. So 1/2. Now substitute the values of these in this formula. x1 हमारा 7 है, y2 1 minus y3 that is k bracket plus x2 5 bracket y3 that is k minus y1 minus 2 plus x3 3 y1 that's -2 minus y2 that is 1. Now solve this. 0 1/2, 7 ones are 7 minus 7 into k plus 5 into k 5k minus plus 5 2's 10, okay, plus minus that is 2 minus 2 plus minus 1 that is -3 into 3 that is -9. Now minus into minus that is minus into plus that is minus. Shabash, 3 3s are 9, right? Now that is 0 is equal to 1/2
bracket. Now first we will add 10 plus 7, that is 17. 17 minus 7k plus 5k minus 9, that implies 0 is equal to 1 upon 2 bracket. 17 minus 9, that is 8, minus 7 minus 7k minus 5k, that is minus 2k. Okay, that implies 0 is equal to 8. Yeah, what we will do, we will cancel 2 this side, so by multiplying 2 on both sides, this will cancel, is equal to 8 minus 2k. Okay, we will write here. Now 0 into 2 क्या हुआ, that implies 0 is equal to 8 minus 2k. Now अब हमें ये इस 8 को इस साइड में कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट, दिस इज प्लस, सो सब्ट्रैक्ट 8 ऑन बोथ साइड्स, तो 0 minus 8 is equal to, यहाँ पर minus 8 plus 8 कैंसिल हो जाएगा, minus 2k रहेगा, तो what is the result, that is minus 8 is equal to minus 2k, minus minus cancel. Okay, now cancel this 2 by dividing on both sides 2, that is 8 upon 2 is equal to k. Okay, that implies 2 1s are 2 4s are 8, that is 4, or k is equal to 4. So इस तरीके से हमें value of k in the part first निकला, that is 4. Part second, now x1 in part second is equal to 8, x2 is equal to k, x3 is equal to 2, y1 that is 1, y2 minus 4, y3 minus 5. फिर से मैं देख रहा हूं, x1 8, x2 k, शाबाश, x3 2, y1 1, y2 minus 4, y3 minus 5. Now substitute, now write the formula, area of triangle is equal to 1 upon 2 bracket x1 y minus y plus x2 y minus y, that is y3 minus y1 plus x3 y minus y, that is 12. You can, तो ये पहले ही मैंने आपको सिखाया ये फार्मूला कैसे लिखनी है. नाउ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगेन मैं कहता हूँ पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, सो मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा एंड सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस फार्मूला. सो 1 upon 2, x1 हमारा किसके बराबर है, 8 के बराबर, y2 minus 4, y2 minus 4 minus y3 minus 5 plus x2, that's k, bracket, y3 minus 5 minus y1, that is 1, plus x3, that is 2, y1 1 minus y2 minus 4. y2 minus 4. Now after solving it, 1 upon 2 bracket 8 minus 4 minus plus 5 plus k minus 5 minus 1, that is minus 6,
okay, plus 2 bracket 1 plus 4 0 is equal to 1 upon 2 8 minus 4 plus 5. What is the result? That is 1 plus into minus, that is minus k into 6, that is 6k plus 4 plus 1, that is 5. 5 into 2, that is 10. 0 1 upon 2 8 1s are 8 minus 6k plus 10. 0 is equal to 1 upon 2 10 plus 8, that is 18 minus 6k. Now multiplying 2 on both sides, and by this way this 2 will cancel. That implies 0 into 2, we are multiplying 2 on both sides, is equal to, and when we multiply 2 here, 2 and this 2 get cancelled, so it will remain here 18 minus 6k. Now cancel 18 on both sides. Now we need to cancel this, so subtract 18 by 18 on both sides. This is 0 minus 18 is equal to minus 6k. So what will be the result? This is minus 18 minus 6k. This and this get cancelled. So divide both sides by 6 is equal to k, because 6 and 6 get cancelled. So now 6 1s are 6, 6 3s are 18. That implies 3 is equal to k, or k is equal to 3. So the value of k in part second is 3. So the value of k in part second is 3. फिर से मैं रिपीट करूंगा. पार्ट सेकंड is x1 is 8, x2 k, x3 2, y1 शाबाश 1, y2 minus 4, y3 minus 5. So write the formula of area of triangle here. 1 upon 2 this into x1 into x2 minus x3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So substitute the values of these in this formula. You will get what? Value of k is equal to 3. I hope कि मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझा होगा. And this is the very important question from the examination point of view.